morning, good evening, green morning, green afternoon, green evening from world over. Wherever the people are joining us, our brothers and sisters, our Indian diaspora, we extend a very hearty welcome. Today is a very, very special day for all of us. Today is the National Youth Day, that is 12th of January 2021. And today is also a very happy birthday of Swami Vivekanand ji. And we have got a very distinguished guest with us today, Dr. Vivek Modi ji. He's a professional speaker and wellness educator. And we are taking on the same theme, what we have got this year for Swami Vivekanand ji's birthday and National Youth Day, channelizing youth power for the nation building. And let me roll few quick slides. International Chamber for Service Industry since 1994, and there are approximately 31 million non-resident Indians at present. Just 3 days back, we had contribution to Atmanirbhar Bharat 16 Parvasi Bharati Divas annual convention with the Suriname president as the special guest on this occasion and Honorable Prime Minister being chief guest. Before Bharatiya Parvasi Divas started, there used to be and there is and there will be, that is Punjabi Parvasi Divas every year on 13th of January. Today is 12th. Tomorrow you have got a big celebrations from world over. All the Punjabis, those have gone to different countries. Tomorrow you have 27th Punjabi Parvasi Divas. This year, 3 days back, you had 16th Parvasi Bharatiya Divas, and this is Punjabi Parvasi Divas. And this program is from 9 a.m. to 9 p.m. 12 hours, the whole day there is a celebrations. Heartiest congratulations to Honorable Prime Minister and Education Minister for the new education policy. In 1947, we just had 19 universities, 400 schools and 5,000 students. We have come a long way. Today there are 1,028 universities, 40,000 colleges, 15 lakh schools and 31 crore students. When we talk about it, new education policy on 29th of July, wonderful document. What used to be there earlier, value and ethics based practical education in the ancient time. But however, the time has changed, things have got changed, all activities have got changed, and everybody has come a long way. So today, while focusing on holistic education, ladies and gentlemen, our chamber had been having beaming for 12 hours per day during pandemic. We are organizing almost 30 webinars per week, and we are with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. In the evening, you have got Wellness Sector Skill Council with us. Friday, we are from Singapore for water conservation. Saturday, we are with Swami Vivekanand ji's talks right from Chicago. And then you have got on Sundays, micro, small and medium enterprise. Sunday morning, you had Srimad Bhagavad Gita's, kind of inputs, valuable inputs, and what is India's main Upanishad. And then every day, Monday to Saturday, 4:30 in the afternoon, you have got youth empowerment program. Saturday evening, 7 p.m., you have got Ayurveda. And Sunday, you have got, besides MSME, three more important programs. One is Srimad Bhagavad Gita, what you have got in the morning at 9:30. Then waste to resource management, that is right from our homes and every place. That is from 9:30 to 11. And then waste to resource management, 12:30. And India ASEAN series with a special focus on Northeast, that is at 3 p.m. And late in the evening, you have got two special webinars every Saturday and Sunday. That's at 8:30 with the Indian diaspora. So youth empowerment is very important. Teacher empowerment is very important. But this all has to be taken care of. When we collected data during this pandemic, one of the serious thing which has emerged, that world will get to the new order, and that is water conservation is very, very important for all of us. And that is possible when you have women empowerment, because women are at home, they are at school, they are at college, they are at institution, they are at working places. They're in our day-to-day life, and your health and wellness is also very important.
And under that, the research which we have carried out during this pandemic, we come to know that basic food, basic health, and basic education is very important. Whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve, ladies and gentlemen. Let's come together. We have got Dr. Vivek Modi ji, the medical officer who is turned professional speaker and wellness educators in ICIS, in what do you call, through ICSI. We are working in the direction to get motivational speakers from time to time to speak, to address, to share their vision. So, after completing his MBBS and postgraduate diploma in administration, he worked for good about 8 years in the corporate healthcare organization in various capacities. And in 2010, when he took a call to become a full time professional speaker, he was working as a chief operating officer. He conducts his workshops on holistic wellness for personal and professional excellence, leadership, and public speaking in different parts of India. He is also visiting faculty for Swami Vivekanandaji's Institute of Human Excellence, Ramakrishna Mission, Ramakrishna Mutt, Hyderabad, and many other reputed organizations. Dr. Modi ji is a certified trainer from world-renowned Dale Carnegie Training Institute. He is a much sought-after speaker. So, ladies and gentlemen, this evening, join me in extending a very hearty welcome to Dr. Vivek Modi ji. Pleasure to have you with us. Thank you very much for sparing your most valuable time. And today is the most auspicious day. You spared time today and you come. That's a great thing for all of us. With these words, ladies and gentlemen, let's extend a very warm welcome to Dr. Vivek Modi ji. Namaskar. Thank you so much, Major Dr. Gulshan Sharma ji, Director General, International Chambers for Service Industries. My namaskars to all people from different parts of India and world around. I intend to speak for next 30 to 35 minutes and would like to close by 2:45 sharp. So with that, I'll just begin a very short presentation just to keep you all on the track, and hopefully you will find it useful. So I would just seek a presenter privilege, and I'll do that. Yes, I have it. Thank you so much, sir. Yes. So the topic today we are going to discuss is on this momentous occasion of 158th birth anniversary of Swami Vivekananda, the National Youth Day. We are going to talk about channelizing youth power for nation building. My name is Vivek Modi, and now I want to address primarily keeping in mind the youth of this country, the people from different parts of India, the students from various colleges from Northeast, Kashmir, and many other parts of India and people world around. Let's very quickly understand the four things about which I'll be talking in this. Very briefly, let me mention, I'll tell you briefly about what are the current times offering to us. What is this time about? Second thing, the challenges for the youth in this time. Third thing, the opportunities for the youth. And fourth thing, how can we get inspired by Swami Vivekananda? How do we look at his messages for the youth, which might be relevant, probably the most relevant in current times? So that's going to be the agenda for this session. Let's understand how the current times is defined. The current times is presently defined, and I know this because I have been taking this session in few organizations where I teach leadership in VUCA world. VUCA is the word used by US Defense Forces in 90s. And what VUCA means is it's an acronym VUCA, where V means volatile, U means uncertain, C means complex, and A means ambiguous. This is the word we are living in, volatile. Often this word is used in context of share market. शेयर मार्केट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये शब्द यूज आता है वोलेटाइल, बड़ी तेजी से परिवर्तन लाने वाला. सर, just for your confirmation, should I keep it Hindi dominant or English dominant? I'm sorry, I just forgot that part. जैसे आपको काम. You could just give me a nod. Should I speak primarily in Hindi or English? की आवाज चली गई.
Okay. Should I हाँ, speak in Hindi or English? मैंने कहा जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, so I'll try to keep a mix of both. हाँ जी, शायद सारे स्टूडेंट्स के लिए वो कन्वीनियंट श्योर, रहेगा। श्योर जी। थैंक यू सर। सो वॉलेटाइल मीन्स तेजी से परिवर्तन होने वाला। हमने शेयर मार्केट के संदर्भ में ये बात बहुत कॉमनली सुनी है कि कैसे मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, और किसी को कुछ पता नहीं है क्यों हो रहा है ये। देर आर सो मेनी अदर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, अनसर्टेन, वी डू नॉट नो वैक्सीन वुड वर्क, होपफुली इट वर्क्स, वी आर नॉट वेरी श्योर whether there will be third wave, fourth wave. There are so many uncertainties in this world. Especially the current time, 2020 has been exactly the world what we call VUCA world. We had a black swan event, we had this COVID-19, we shook our roots, and there are challenges as well as whenever the challenges come, there are opportunities. Third thing, C means complex, जटिल, और जटिलता तब आती है when there are too many variables, जहाँ इतनी सारी चीजों से दुनिया का आउटकम प्रभावित हो जाता है। चाहे यूएस का इलेक्शन हो, आउटकम प्रभावित हो जाता है। चाहे ब्रेग्जिट हो रहा हो, we know that it will affect everywhere in the world. It may be some problem in the Middle East, some war, some kind of issue, and we know the world will take a new shape. So it's a very complex situation to read because there are too many factors which can affect the outcomes of many things. And ambiguous, as we know, when there are so many outcomes possible, it becomes ambiguous. So in this world, what are the kind of challenges our youth have? हमारे युवाओं के साथ में क्या चुनौतियां हैं इस प्रकार की दुनिया में, जो कि वूका वर्ल्ड है, जो कि वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है और एम्बिगुअस है। तो मेरे हिसाब से कुछ प्रमुख चुनौतियां जो युवाओं के पास है, उसको मैंने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। सबसे पहला चैलेंज जो युवाओं के पास है, फियर ड्रिवन थिंकिंग। फियर ड्रिवन थिंकिंग 1947 में अंग्रेज तो शायद छोड़ के चले गए, लेकिन उससे पहले की जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारी पीढ़ी थी, उन्होंने अपना काफी समय डर में बिताया। 1930-40 में हमारे देश की औसत आयु, द एवरेज एज of an Indian used to be below 30 years. Can you imagine, sir? Can you imagine, all of you? Below 30 years means people used to die at very early age. Any family which had 4 or 5 children, out of 5, probably 2 or 3 made it to the adult life. This was the time when our people were even not sure about having good to score meal. So malnourished children were seen everywhere. And when people live with a survival instinct, not thrival instinct, जब हम सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए जीते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर भय एक प्रमुख ड्राइविंग फैक्टर हो जाता है, तो हमारे सारे डिसीजन जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। फियर स्टॉप्स अस फ्रॉम रियलाइजिंग अवर ट्रू पोटेंशियल। हमको चुनौतियां लेने से रोकता है, हमारे आत्मविश्वास को झिकझोरता है। और उस वजह से क्या हुआ, जो भी उस समय की पीढ़ी थी, जो भी हमारे पहले ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के जमाने के समय में जो भी लोग थे, उन्होंने अपना जीवन भय में जिया। और भय से युक्त समाज के अंदर ट्रस्ट की कमी आती है, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर एम वाज टू सर्वाइव। एंड दिस थिंकिंग percolated down to the next generation, and some of us still may be having that kind of thinking. Now you may be thinking, how do you say this, Vivek, that we are living with fear? I see it every time I talk to youth. I see it often. If you go to a college and ask, what are your goals? There are good chances that most people, they will reply either, I want to get placed in a multinational company, or I want a government job. Now, I'm not telling that people who are fearful only they go for job. No, that's not the meaning I'm trying to give. मेरा मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना गलत बात है या सरकारी नौकरी ढूंढना एक गलत बात है। लेकिन अगर 20 साल के युवा, 20 से 25 साल के युवा, यदि अधिकांश लोग सिर्फ एक नौकरी के बारे में अपना लक्ष्य रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनमें असुरक्षा की भावना को दर्शाता है। कहीं ना कहीं उनकी सोच इतनी लिमिटेड हो गई है, और इसमें शायद उनकी गलती नहीं हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दे हैव सीन इट इन द एनवायरमेंट वेयर दे हैव बीन ब्रॉट अप। उन्होंने देखा है अपने परिवार में चारों ओर, अपने माता पिता को, अपने चाचा को, अपने सभी लोगों को, कि नौकरी करो, नौकरी के बिना जिंदगी नहीं है। और जब इस तरीके की सोच में व्यक्ति पैदा होता है, तो ये दर्शाता है कि अभी भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे है, सर्वाइव होना चाहता है,
उसमें कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग की भावना अभी भी नहीं आई है, उसने वो देखा ही नहीं है। तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस और इंगित करना चाहता हूं, इस और ले जाना चाहता हूं कि सोचिए जरा, यदि हम भय से ही हर निर्णय लेंगे तो क्या हम कभी भी आगे चलने वाली सोच रख पाएंगे? कभी भी हम ऐसी सोच रख पाएंगे जिसमें हम छोटा मोटा खतरा लेके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, पॉसिबिलिटी थिंकिंग लाके देश के लिए कुछ नया कर सके? हमारे लिए एक छोटी सी नौकरी मिल जाना ही ऐसा लगता है जीवन का लक्ष्य मिल गया। तो यह लक्ष्य दिखाता है कि युवा आज भी फियर ड्रिवन थिंकिंग से है। हमारे देश को आज आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। आफ्टर 70 years, why should we be driven by fear? The times have changed. We are living in a free country. Probably we have extra freedom. Such freedom, what we get in our country, भारत में हमको जो स्वतंत्रता मिलती है, बहुत सारे देशों में इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। वो चाहे स्वतंत्र देश हो, लेकिन बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। और आज ये होते हुए भी, why should our youth be driven by fear? ये पहला चैलेंज है, इस fear driven thinking से मुक्ति। जब हमारे बच्चे रिस्क टेकिंग लेने लगेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रेकलेस रिस्क टेकिंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग रेकलेस रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, और उसको लेने का तरीका है, लेकिन ऐसे उदाहरण अभी भी और ज्यादा उदाहरण लाने की आवश्यकता है। दूसरा कारण, स्टिमुलस ड्रिवन लाइफ। वी आर लिविंग इन अ अटेंशन इकोनॉमी। यदि एक युवा सिर्फ स्टिमुलस से ड्रिवन होकर, स्टिमुलस का मतलब क्या है? देयर आर टू वेज आवर माइंड कैन टेक इंस्ट्रक्शंस, वन फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड which our senses sends the information to our mind, and our mind takes a decision based on what is getting. It's called stimulus driven thinking. Another is self driven thinking, where mind takes a self directed decision, and based on that our follow up happens. So whenever a person is primarily stimulus driven, जब हर कुछ स्टिमुलस ड्रिवन होता है, तो हम सही मायनों में स्वतंत्र दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं। We are not able to really utilize our 100% potential. Let me share an interesting true incident of my life. This happened after my MBBS. I was traveling with some of my friends in a car in Hyderabad, and we were discussing about medical tourism business. आपको पता होगा कि अगर एक बाईपास सर्जरी भारत में 3 से 4 या 5 लाख में होती है, तो यूएस यूके के अंदर इससे 10, कहीं कहीं 20 गुना ज्यादा पैसे में होती है। तो हमको लगा कि हम विदेशों के लोगों को यहाँ लाएंगे, उनको अच्छी सी सर्विस देंगे, विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, सर्विस भी अच्छी मिलेगी। बाई For your information, Indian healthcare industry provides, it's on par with the world in providing quality healthcare when it comes to such procedures. So हमको लगा कि बहुत अच्छा बिजनेस बनेगा, देश का भी अच्छा होगा, हमको भी अच्छा करियर मिलेगा. So we were discussing during this travel in the car within the city. We were discussing. I was sitting on the rear seat, and I had two more friends. One of my friend has come back from America, and we were so happy, enthusiastically discussing these things. At that moment, our car stops at one of the signals, and it often happens that at signal, if the stoppage is longer, you will find some people seeking help, begging for things, and selling few things. So we were talking. Our car air condition was on. Windshield. So one beggar came and he knocked at the windshield and he told, "Bhaiya, kuch de do. Give us something." So he was a young boy, healthy boy. So my friend who was driving the car, he told, please, aage jao bhaiya aap. So this beggar was a bit different. So he didn't respond anything, but before going, when when the window was down, he just told one word. He told one small sentence. He told, "Tu to marega, you will die." He just said that. He left. And next moment, I saw him. He was busy begging at some other places. My friend who was driving, he couldn't handle this. He told, "How dare he curse me like this just because I didn't give him some money? Look at him. He's a healthy young boy. Why can't he work hard and earn something? How dare first he beg shamelessly and then ask? And once we are not giving him, curse us like you will die." He was furious, wanted to get down and hit that person, that beggar. And we had to stop him somehow. And after that, what I noticed is our discussion went on to why begging is worst thing, why we should not give money to beggars. Once you give, you make them habitual. Why can't these young people work something and do something worthwhile? Like this, the discussion happened. And the friend from US told, this is the problem in India. How do we nationalize a simple problem or local problem to a national level?
as if there's no begging in some other places. So, anyways, what I noticed is that after the statement that tu to marega, the beggar was busy in his business still, not bothered about what we were doing. But we, the well-read people, so-called doctors, were not able to handle our emotions. We were very pleasant, positive, enthusiastically discussing about our future business plans. And here comes a beggar for his business, makes one statement and changes the narrative. How did we think? It completely changed us. What we were in at that time was a negative zone. From a positive zone to negative zone, we were brought by one beggar, by one statement. That's what I call, friends, stimulus driven life. When you think that one advertisement, one movie, or something else which is happening surrounding you, millions of pop-ups which you get on your WhatsApp or on your Instagram or on your Facebook or on your YouTube, if they are the only thing which will drive your life, then, my friend, where is the freedom? You know, this man called Yuval Noah Harari, I'm sure you might have heard, very respected thinker, philosopher, wrote some of the very nice books, all bestsellers. He says human mind has become hackable. And there's a point in it. We call it attention economy because every major company is craving for your attention. Their buck comes from your attention. Think about it. In last 5 years, how much money did Mark Zuckerberg earn from you, and how much money did you earn from the Mark Zuckerberg? For most people, the first instant is true that it's Facebook, it's Instagram, it's WhatsApp, it's all these platforms which have made money out of us. I'm not blaming them. I'm not the one who says technology is bad. I'm the one who is saying that why can't we use them? Why can't we take advantage of them? I am doing it. So many people are doing it. My question to you is, if Virat Kohli puts an Instagram post, he gets 50 lakh rupees. What do you get? Do you get even 5 rupees for your Instagram post? Are you using it for your business? Are you using it for building a career, for building a brand? Or are you simply using it for seeking gratification, for taking pictures and waiting for the likes? That is what I call a stimulus driven life. It takes away a lot of important time of the youth. Third thing, which I feel is loss of faith in self. Friends, what I say, you may not do. And I'm talking to the youth. What your parents say, you may not like to do. What your well-wishers or teachers say, even that you may disregard, saying, we are adult, we have our own mind, we will take our own decision. But my question is, what you decide, do you follow that? Do you follow? क्या आप वो चीज फॉलो करते हैं जो आपने निर्णय किया है? यदि मेरी बात नहीं मानते चलेगा, पिताजी की बात नहीं मानते, वो भी एक बार हमने मान लिया, लेकिन अगर आपने खुद की बात नहीं मानी तो क्या होगा? लॉस ऑफ फेथ, आत्मश्रद्धा चली जाएगी, स्वयं का विश्वास चला जाएगा. Not because I'm not capable, because I'm not disciplined to follow my own command. Every time I disregard my own command, I give one signal to my subconscious mind, and my mind next time says, hey, are you serious? Will you be able to do it? And that is causing a major challenge for a lot of youth. That we have a lot of knowledge. We are in a knowledge-rich era. I use a word often. This is called infobesity. हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां ज्ञान की बहुलता है, ज्ञान की कमी नहीं है. आज से पहले मुझे ध्यान है, जब मैंने मेरा फाइनल ईयर एमबीबीएस किया था, मेरा लगभग पूरा समय लाइब्रेरी में बीता था. आज के दिन आप लाइब्रेरी में चले जाओ, आपको ज्यादा युवा नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी मोबाइल फोन में आ चुकी है, कंप्यूटर में आ चुकी है, उनके टैबलेट्स में आ चुकी है. नॉलेज की कमी नहीं है. दुनिया की सारी ऑथेंटिक जो भी नॉलेज है लगभग फ्री में अवेलेबल है. सारे मेजर यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज, अगर आप बिना सर्टिफिकेट के करना चाहते हैं तो फ्री में अवेलेबल करवा दिए. लेकिन इस नॉलेज की बहुलता होने से इसकी वैल्यू कम हो गई है. बहुत सारे लोग इसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं. When things comes free, we do not value. घर की मुर्गी दाल बराबर हमारे यहाँ बोलते हैं. जो चीज बड़ी आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है. और इस वजह से क्या होता है, नॉलेज होते हुए भी जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हमें आत्मविश्वास की कमी आती है, क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, अब कोई बहाना भी नहीं बचा और उसके बाद भी हम एक्शन नहीं कर रहे हैं. अब आगे बात करते हैं. ये तो चैलेंजेस की बात होगी, बट आई वांट टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन, बिकॉज दैट इज व्हाट we are looking for. That is what is going to give us what we want. Let's understand about our opportunities. Number one, opportunity of becoming a solution provider. Opportunities of becoming a solution provider. हमारे देश में
जितनी ज़्यादा challenges है, our country has so many challenges, no doubt. It's such a diverse country. इतनी बहुलताओं से भरा देश, इतनी विभिन्नताओं से भरा देश, हर जगह की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने सारे कल्चरल अलग अलग differences. Although we have a unity in all that, but each place has a different thing, and therefore each place provides a different opportunity. The point is, are we problem talkers or solution seekers? Listen again. The problem is we are not solution seekers. Majority of us have become problem talkers, and that is where we are missing the opportunity to collaborate with people. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक विज्ञान का टीचर है, एक गणित का टीचर है, एक हिंदी का टीचर है, एक अंग्रेजी का टीचर है, एक साइंस का टीचर है, पांचों लोग मिलते हैं, एक आदमी जिसको अच्छे से ऑनलाइन मार्केटिंग आता है, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग आता है, उससे जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑनलाइन कोर्सेज देंगे, ये हमारी एक छोटी सी यूनिट है, कैन यू मार्केट फॉर अस? वो बैठा, यहाँ बैठा हुआ बंदा, एक छोटे से टाउन में बैठा हुआ बंदा, इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, कोलैबोरेशन का पावर यूज करते हुए, कहीं अमेरिका में, कहीं यूके में बच्चों को कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई तेलुगु पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई गणित सिखा रहा है. This is the opportunity for the youth. I myself, I have been taking courses where I am teaching people, somebody from Singapore, somebody from Oman, from Abu Dhabi, from Delhi, from Mumbai, from Pune. How is it possible? It is possible because we have to identify the opportunities this times are providing us. जिस प्रकार की पावर, जिस प्रकार की शक्ति आज ये जो गैजेट्स है, जो गूगल एंड फेसबुक और ये सब ने हमारे हाथ में जो दी है, इतना सस्ता स्मार्टफोन, दुनिया का सबसे सस्ता 4G इंटरनेट हमको भारत में मिल रहा है, इसकी क्षमता का क्या हमने उपयोग किया है, ये प्रश्न है. और आपको लगता है कि इसके लिए बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता है? नहीं है. एक चैनल मैंने देखा था कहीं, गुरु चेना चैनल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैंसर से थका हारा हुआ, अपने जीवन की आस छोड़े हुए बैठा था, वो व्यक्ति, और एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बुढ़ापे की बीमारियों से थोड़ा सा परेशान होकर डिप्रेशन में जी रहा था. दोनों ने मिलकर एक चैनल बनाया, गुरु चेला. छोटे से गांव में, राजस्थान के अंदर, कहीं सीकर या चूरू जिले के आसपास, बहुत छोटे से गांव में उन्होंने एक चैनल शुरू किया, गुरु चेला. साधारण सी बातें, अंग्रेजी भी नहीं आती उनको, हिंदी में आता है, साधारण सी बातें बताना शुरू की, रोड साइड मैजिक, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो अंधविश्वास को भगाती है. आज 1 मिलियन से ज्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. अगर एक गांव में रहने वाला, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत ज्यादा उसको अंग्रेजी भी नहीं आती, अगर वैसा व्यक्ति शुरू करके एक इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनाकर कुछ पॉजिटिव समाज के लिए कर सकता है, वो अंधविश्वास भगाने का काम कर रहा है, तो हम लोगों को, युवाओं को कौन रोकता है? Why are we not leveraging the technology? Why are we not taking advantage? Why are we not collaborating? Who is stopping us? Because we have become a problem talker. Let me tell you, friends, let me give you an example. Since I'm a doctor, let me give you this example. Go to a medical store. वहां जाके बोलिए एक थर्मामीटर चाहिए. 25 से 30 रुपए में, 40-50 रुपए में अधिकतम आपको एक मर्क्यूरी थर्मामीटर साधारण सा मिल जाएगा. वो थर्मामीटर लाइए, किसी के भी मुंह में 2 मिनट रखिए. थर्मामीटर विल टेल यू कितना टेम्परेचर है, किसी व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है, उसे बुखार है या नहीं. ये पता लगाने के लिए आपको 4.5-5 साल की MBBS करने की जरूरत नहीं है. There's no big intelligence required to talk about what is the problem and who is responsible for that problem. The fact is, can you provide solution? And now that you are about to become a graduate or will be a graduate, or some of you might be into post-graduation, you have not much left to complain, because the country and society has given us enough now. If you are a graduate in this country, it's a privilege. Please recognize that. Please understand that. So understanding that, now the question comes, what is the one problem I'm solving? मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा मैं लोगों का स्ट्रेस कम कर रहा हूँ, मैं लोगों के हेल्थ प्रमोशन कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं, why are you doing this being a doctor? I told them, being a doctor, is it a liability? Should it bind me or should it free me? Your education should free you. But the point is, are you overcoming your herd mentality? Are you overcoming your fear-based thinking? Are you overcoming your limitation of stimulus-driven, being stimulus-driven? Are you overcoming these small limitations and taking the opportunity? Are you leveraging the collaboration, the using the power of collaboration? Are you using the technology for your own benefit? If that happens, there are opportunities.
there are opportunities. Contributor mindset. Let me tell you what is a contributor mindset. It is a law of the universe that if you want to get something, you have to give something. Zig Ziglar, the famous writer and speaker, trainer, sales trainer, said, if you want to get what you want, then you need to help enough people get what they want. I repeat, if you want to get what you want, then you have to help enough people get what they want. यदि आपको वह चाहिए जो आप चाहते हैं, तो आपको ऐसे अनेक लोगों की उस काम में मदद करनी होगी जो वे चाहते हैं. बहुत सिंपल है. अब प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट है फियर ड्रिवन. वो क्या बोलेंगे? पहले गारंटी दो, पहले बताओ मुझे सैलरी कितनी दोगे, पहले बताओ आप मुझे क्या दोगे, उसके बाद सोचेंगे मुझे क्या देना है. व्हेन यू फोकस ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर हैंड, आपको कोई दूसरा क्या देगा ये आपके हाथ में नहीं है. व्हाट यू कैन गिव इज इन योर हैंड, एंड व्हाट यू कैन गिव इज नॉट ओनली मनी. At this youthful age, you have time, you have energy, you have knowledge, you have network, you have technology. If you want, if you just develop the attitude, if you just develop the attitude, if you just develop the drasti, आपको सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है देखने का. अगर उतना हो जाएगा, then you will not find it difficult. आपको मुश्किल नहीं होगा. आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ. लेकिन वो माइंडसेट चाहिए, पहले देना फिर लेना. It's a fundamental difference between people who have made a difference, people who are successful, versus people who are always waiting. And when the opportunity comes also, they get confused because they want to be 100% sure. उनको गारंटी चाहिए, मुझे मिलेगा तभी मैं कुछ दूंगा. अरे भैया, बहुत सारी चीज आप ऐसी है जो आप दे सकते हो और उसको देने से कुछ भी कमी नहीं आएगी. But then we need that mindset, contributor mindset. Let me tell you an incident, interesting real incident of Chaya Thakur. Chaya Thakur was a young girl from Gandhinagar district of Gujarat. In a school, she saw that there are people, there are small children, when they want to drink water from the water pipe, there is a pipe like this, horizontal pipe. Hopefully, you are able to see it, horizontal pipe. On this, there are water taps. Okay, and young children used to drink water like this with the hand directly. So what she saw is that young children, some of them, उसमें से कुछ छोटे बच्चे वो पाइप तक पहुंच नहीं पा रहे थे, नल तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था. तो जब वो पानी पीते थे तो पानी ऊपर से गिरता था. Water used to fall from certain height. When they used to drink water, it used to spill over their clothes. उनके कपड़े गंदे हो जाते थे. या फिर उनमें से कोई दूसरा छोटा बच्चा उसको गोदी में उठाता था. The other child used to lift him and or her, and that young child used to drink water from the water tap. Chaya Thakur saw a problem. Now there were two options. One option, become a problem talker. Look at our school. It doesn't even provide good facility to drink water to my young brothers and sisters. What is school management doing? Problem talker. And when you talk these problems, you are not wrong. You're finding out some correct fault, no doubt. But here, what did she do? Chaya Thakur went to that pipe which was like this. She used her mind a little bit. She tilted this pipe like that. This side, water taps were at for higher height people, for the people who are longer, who are taller, people who were shorter, young children, they could drink water from this side. And by this way, she solved the problem. Honeybee Network identified this task of Chaya Thakur. What they especially liked it, her thought process, her attitude, her samvedana, her empathy towards young brothers and sisters, and then ability to solve the problem rather than just being a problem talker. Today, we have a patent in name of Chaya Thakur. It's called inclined installation of water taps. Many schools, they install water taps like this now. Otherwise, I have to have multiple pipes at different heights. They have one long pipe and just tilt it. You get water for all. This was used because Chaya Thakur had that attitude of contribution. What will I get? That didn't come in her mind. And when we give, it's a law of the providence we receive. जब हम देते हैं तो ब्रह्मांड का ये नियम है कि आपको फिर से मिलता है. लेकिन आप में देने की क्षमता होनी चाहिए, देने का माइंडसेट होना चाहिए, देने का नजरिया होना चाहिए. छाया ठाकुर को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया. अब ये इतना सा प्रश्न है जो छोटी बच्ची ने हमको बताया है. हम देश के युवा, एक रफेल हमारे यहाँ आता है
फ्रांस जैसे छोटे से देश में 138 करोड़ का युवा देश ताली बजाता है। देखो हमने रफाल ला लिया, क्या हमारे लोगों को लगना नहीं चाहिए कि व्हाट इज दैट व्हिच दैट स्टिल स्मॉल कंट्री कॉल्ड फ्रांस कैन generate, but we the 138 crore people who were independent 70 years back are not able to generate that. That should be our question. But our youth is not still thinking that because of the herd mentality. लोगों ने ऐसे blinkers लगा रखे हैं ऐसे, और blinkers लगा के अपने अपने reason बता रखे हैं, and that reason they are giving for not growing in their life. We have become people who got stuck into giving excuses. 3 mantras, and I'll be able to close after this. First thing, work unsupervised. Can you work unsupervised? Some of you might be in final year, might be about to launch your career, might be starting a startup or maybe joining a company, job somewhere. Yes. First thing you need to understand is, can I work unsupervised? Am I working because my boss is telling me to work, or am I working because I want to work? This is a fundamental difference between people who become leaders and people who become followers. I read this book called The Professional by Subroto Bagchi, the co-founder of Mindtree. And he says a professional is one of the qualities he says, a professional is one where somebody in his late 60s after retirement joined the organization, but still was not able to work unsupervised, was still needing supervision, was still coming in time because there was a swiping machine, there was a boss who was noticing. I used to think at 60 also the person is still an employee and not has become an employer. I'm talking about the mindset. I'm not talking about at 60, if a person works or comes to the work because there is a swiping machine. At 60, if he is swiping exactly at 5 p.m. because 5 p.m. is the exit time and then running to his car, which is parked very near to the exit gate, what is the life he has lived? Is he a free man? Even at 60 is not understood that yes, I'm working in an organization. Yes, work might be given by my seniors. Yes, organization will give me a structure of work. But then ultimately, once it is under me, once I'm assigned, it's me who owns this work. When I left my first organization, I met Mr. Dr. Surendra Raji, and I told, sir, I'm going to another organization. I would like to seek your advice, which can help me. He told me one thing, Vivek, I'll just give you one mantra which I have followed all my life. And mantra is, wherever you work, think it's your organization. You will never have to look back. Can I work unsupervised? Ask yourself, when your father is present and when your father is absent, is your working style changing? When your boss is there in the office and he's not in there, does your working style change? If it changes, then you need to change that. Because now you're going to shift. Your shifting share, your career is going to change. Till now, you may be saying, I live with my parents. After a few years, your parents will say, I live with my children. And this will require responsibility, and this will require this ability to work unsupervised. Friends, please look at that. Next mantra, head to think, heart to feel, hands to work. This was the guidance of Swami Vivekananda. Head to think. Yes, I know many of us are very intelligent. We can give strategic ideas. We can analyze the situation very, very nicely. But that is just IQ. That is not even 50%. Swamiji said, without heart to feel, it's all zero. Do we have some Vedana like Chaya Thakur? You might be able to give a better solution than what Chaya Thakur gave, but do you have the empathy? And I'm not talking about cognitive empathy. I'm talking about emotional empathy. Not just understand cognitively what others feel, but feel what other feels. That's called emotional empathy. Do I have that? क्या मेरे पास वो है? अगर मेरे पास heart to feel नहीं है, तो मेरा head to think will not work. It's not the people with highest IQ enjoying at the top position or are the most successful. You can notice it. It requires heart to feel. And at the end, what is the biggest motivator? It's not a talk or not a quotation. The biggest motivator is action, hands to work. You might feel inspired. You might feel a little bit of energy after listening many of such talks. But then, जब लोहा गर्म है ना, तभी उस पे वार करना चाहिए. When the momentum is there, can I take action? Because if I miss action, then I miss the momentum. And when I miss the momentum, my things will remain here and it will never come into action. So that's the second mantra, Swamiji's mantra. And the third and last mantra, can I become a solution seeker's mindset?
मैंने कौन सी समस्या का समाधान किया। बहुत सरल एक तरीका है, अगर आपको करियर बनाना है, अपने चारों तरफ की समस्याओं की एक लिस्ट बनाइए, उसमें से कौन सी समस्या मैं हल कर सकता हूँ इसके बारे में सोचने में लगिए, कोलैबोरेशन कीजिए, अपॉर्चुनिटीज देखिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे थोड़ा पूछिए, 1 महीने तक इसमें लग जाइए, आपको अपना करियर का एक पाथ मिल जाएगा अपने चारों ओर ही। यू विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। लोकल फॉर वोकल हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। उस जगह की समस्या अगर वहीं का आदमी, वहीं का युवा ठान ले कि मुझे ये सॉल्व करनी है, तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये अवसर क्या हम देख पा रहे हैं? अगर हम देख नहीं पा रहे हैं, देन वी विल बिकम अ प्रॉब्लम टॉकर, जो हमेशा समस्याओं के बारे में बात करेगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, इफ देयर इज वन वर्ड that you find coming out like a bomb from the Upanishads, bursting like a bombshell upon the masses of ignorance, it is the word fearlessness. It is the word fearlessness. लास्ट इसी कथन के साथ मैं आपको थोड़ा सोचने के लिए, आई एम लीविंग सम फूड फॉर थॉट। एम आई लिविंग आउट ऑफ फियर? थोड़ा फियरलेस बनिए। हम स्वतंत्र देश में हैं, बहुत सारे अवसर है। थोड़ा अपने ब्लिंकर्स को हटाइए। दुनिया में नौकरी के अलावा 10 अलग चीजें हैं। सरकार चाहे तो भी इतने सारे युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, चाहे कितना भी चाहे। और हम नौकरी लेने वाले क्यों, नौकरी देने वाले भी तो बन सकते हैं। कोशिश करने की जरूरत है। अंत में एक कोट और विवेकानंद जी का बोलूंगा, जिसको आप मंत्र बोल सकते हो। विवेकानंद जी ने किताब लिखी राजयोगा, और उसमें किसी अन्य संदर्भ में ये बात कही, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत सार्थक है। उन्होंने कहा, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट योर ब्रेन, मसल, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी आफ्टर दैट आइडिया, लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस। एक आइडिया ले और पूरी तरीके से अपने चारों ओर उसके अंदर रम जाए, बाकी सभी आइडिया को छोड़ दीजिए। यही सफलता का मंत्र है, ये विवेकानंद जी ने कहा है। अगर आप बहुत सारे फॉर्मूला पूछते हैं तो ये फॉर्मूला वो देखे गए। इससे याद रखिए, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं मेजर डॉक्टर गुलशन कुमार शर्मा जी का धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। डॉक्टर विवेक मोदी जी, आप तो मस्मराइज कर दिया सबको आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपने सारी चीजों को इतने अच्छे से किया। और आपकी स्क्रीन खत्म बंद होती है तो फिर हम आपके यस, साथ रूबरू आते हैं। एक और सेकंड सर, एक सेकंड हाँ में जी, श्योर श्योर unmute श्योर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन कनेक्ट विद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपनी वेबसाइट भी दी और आप लोग इनके साथ जरूर जुड़िए, www.drvivekmodi.com। तो बहुत अच्छे से, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपके इतने सारे कार्यक्रम हैं आज, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला। मुझे स्वामी जी ने कहा था कि मैं जिनको आपको दे रहा हूं, बस उनको सुनिए और फिर उसके बाद आगे की यात्रा डिसाइड कीजिए। तो जितने भी हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और यूथ आपके साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ करके। और कुछ शब्दें तो देखिए, आपने मेडिकल टूरिज्म की बात करी, तू तो मरेगा, नॉलेज, गुरु चेला चैनल, एंड वी हैव टू बिकम प्रॉब्लम 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 solutions। टॉकर। नहीं नहीं, कुछ लोग हैं जो दे आर जस्ट टॉकर्स, तो दे डोंट डिलीवर। तो वो भी आपका एक बड़ा अच्छा रहा, सब कुछ जो आपने बहुत अच्छे से, और अपॉर्चुनिटीज को आपने कितने सहज भाव से, और मंत्रा तीनों आपने जो दिए हैं, they are remarkable work, unsupervised, head to think, heart to feel and hands to work। ये तो है ही है, solution seeker mindset। wow, that's great, that's great। डॉक्टर साहब, आप बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। आप मेडिकल डॉक्टर हैं और मेडिकल टूरिज्म में कभी भी आप कुछ करना चाहें तो मेरे जीवन की 40 साल की यात्रा मेडिकल टूरिज्म की है। तो कभी भी आप मेडिकल टूरिज्म में कुछ भी करना चाहें, केरला के अंदर अभी बहुत सारे यंग बच्चों ने डेंटल टूरिज्म शुरू किया है। और हमारे खासकर जो प्रवासी बाहर से आते हैं, उन लोगों की जो इंश्योरेंस का कवरेज होता है उसमें डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक आपसे शेयर कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीने विदेश रहते हैं, 6 महीने भारत में रहते हैं, तो उनकी 2 इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उनको मेडिकल कवरेज चाहिए होता है। और देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, जो हमने इस पूरे पेंडेमिक में एक ही काम किया जिसके पीछे हम लगे हैं, कि आयुर्वेदा की हर
मेडिकल ट्रीटमेंट को हम इंश्योरेंस में कैसे लेकर आए. That is the kind of a thing which we are working on, and you would be so happy to know that Switzerland के Prime Minister की daughter जो है, she is doing PhD in Ayurveda, and she is doing in Coimbatore. So there are a couple of things which are happening in country, lot of things are happening over here, and positivity के साथ, सब चीजों के साथ. और आज आप गुरु हैं और हम लोग चेला हैं. आज इसी चैनल में नहीं, बिकॉज आपने इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतने सहज से हर बात को कहा, और मेरा ख्याल सारी युवा पीढ़ी को बहुत आपने प्रेरणा से, और इन सब लोगों को समझ आया है कि देखिए खाली नौकरी ही नहीं मांगना है 24 घंटे, कहीं ना कहीं आपको खुद से महसूस करना है. और दो चीजों का प्रश्न आपने जिग जिगलर की बातचीत की. जिग जिगलर के साथ जो जुड़े हुए हैं वो जिम रॉन है, एंथनी रॉबिन्स, जो इस समय वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं. उन्होंने उन्हीं के यहाँ पहले कार्य शुरू किया था, जो टोनी रॉबिन्स हैं या एंथनी रॉबिन्स है. हमने सिंगापुर की बातचीत की तो उनके बहुत कार्यक्रम वहां होते हैं, सिंगापुर में होते हैं. हाँ, तो लेस ब्राउन दो बातें कहते हैं कि दो चीजों का अगर आंसर लाइफ में मिल जाए तो बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब. नंबर 1, एक तो वो दिन याद रहता है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन है, जिस दिन मैं पैदा हुआ, और दूसरा वो दिन जब मुझे ये समझ आ जाए कि मैं पैदा क्यों हुआ. तो आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए फादरली फिगर आपको बहुत आशीर्वाद भी देते हैं. Because at my age, I think I have to give back to the society whatever society has given to me all these years, and such a long journey coming from the army to the Ministry of Tourism to Parvasi Bharati Divas to Punjabi Parvasi Divas. There's so much. So आज मेरा एक क्या कहते हैं ऋण आपके ऊपर है कि मैं जब भी आप मेरी सेवा चाहें मेडिकल टूरिज्म के लिए तो आप मुझे बताइएगा. I would be more than happy. Our chamber would be more than happy. हमारा एक अलग से सेगमेंट है मेडिकल टूरिज्म के ऊपर, और उसके अंदर भी हम आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं और उसको लेकर चलते हैं. आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. परमात्मा आपको हमेशा सुखी रखें, अच्छे से रखें, प्रसन्न रखें, और ऐसे ही आप अपनी वाणी से युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहें और प्रोत्साहित करते रहें. ये दोनों चीजों को हम साथ लेकर चलें.